Assalamu alaikum everyone. In today's video, we'll be discussing about surgical instruments commonly used in GSOT. Let's discuss the surgical retractors. Various kind of retractors are used, but the common ones are Morris retractor, Doyen's retractor, Devers retractor and Lange-Beck retractor. First of all, ये हमारे पास Morris retractor है. As you can see, Morris retractor, and it's used while making and closing abdominal incisions for ease of working in the deeper layers. Then we have Devers retractor, and like other retractors, it's used to retract the anterior abdominal wall and used in open cholecystectomy for retraction of right lobe of liver. Truncal vagotomy में भी ये right lobe of liver को retract करने में use होता है. And also it comes in different sizes, so don't get confused. Then we have this round body retractor. Round body retractor is used to retract fragile and delicate tissue while performing surgery. As you can see, it has smooth and rounded edge. Then we have this right angle or Lange-Beck retractor. It also comes in different sizes. Like other retractors, they are used to help better visualization of the operative field. Tissue handling is minimized and bleeding is better seen and controlled. Like Devers retractor, it also comes in different sizes. As you can see, there is also a Lange-Beck or right angle retractor. After retractors, we have tissue forceps. There are two types of tissue forceps, tooth and non-tooth forceps. अनटूथ में हमारे पास आता है बेपकॉक फॉर्सेप एंड इसका फंक्शन है टू पिक अप अपेंडिक्स ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी एंड इट्स बेसिकली यूज टू होल्ड डेलिकेट विजरल ऑर्गन्स एंड आगे से ये ब्लंट एंड राउंड होता है अनलाइक एलिस फॉर्सेप. टूथ फॉर्सेप्स वी हैव एलिस फॉर्सेप. एज यू कैन सी इसके आगे जो है वो छोटे छोटे टूथ बने हुए हैं. And function of Alice forceps is to hold skin while raising skin flaps and used to pick up a fold of peritoneum during laparotomy. फिर हमारे पास आ जाते हैं टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स. इनका फंक्शन होता है टू होल्ड टफ स्ट्रक्चर्स लाइक स्किन वाइल सूचरिंग. द नेम इंडिकेट एक टूथ बना हुआ होता है जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको. वी हैव दिस प्लेन फोर्सेप्स. Plain forceps are used to hold delicate visceral organs and it's used to hold blood vessels and nerves while performing abdominal surgeries. As you can see, unlike tooth forceps, ये plain होते हैं बिल्कुल and horizontal serrations इस पे होते हैं. फिर हमारे पास आ जाते हैं sponge holding forceps and they are used to hold the swabs for antiseptic dressings before the surgery. फिर हमारे पास आ जाती हैं जी ये टॉवल क्लिप्स एंड इनको यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू क्लिप टॉवल्स इन सर्जिकल फील्ड. पास आते हैं जी ये हेमोस्टेटिक फोर्सेप्स. इनका फंक्शन होता है टू चेक ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेजल्स एंड आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या होती हैं इनकी. ब्लंट टिप होती हैं इनकी एंड देयर इज़ नो इंटरवल बिटवीन द ब्लेड्स और ट्रांसवर्स सेरेशंस प्रेजेंट होती हैं. कर्व भी हो सकती है आगे से एंड स्ट्रेट भी हो सकती है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर सेम फीचर्स हैं. ब्लंट है, ट्रांसवर्स सेरेशंस हैं बट इट्स स्ट्रेट. दे आर ऑल्सो नॉन एज स्ट्रेट और कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स. और फिर हमारे पास आ जाते हैं जी ये नीडल होल्डर. नीडल होल्डर का फंक्शन है टू होल्ड नीडल वाइल सुचरिंग एंड एज यू कैन सी ब्लंट एंड्स हैं, हॉरिजेंटल सेरेशंस है और इसके बीच में एक वर्टिकल ग्रू सा बना हुआ है. सब जानते ही होंगे वी हैव किडनी ट्रे विच इज़ यूज टू कलेक्ट द स्पेसिमेंस एंड यूज टू सेफली ट्रांसफर sharp instruments and sponge bowl for holding sponge. I tried my best to explain all the surgical instruments which were available at that time. Inshallah, I will try my best to explain the other instruments as well in my upcoming videos. So stay tuned. Don't forget to subscribe. Take care and Allah Hafiz.